S. Chan presents educational video lectures as per the new UGC CBCS curriculum. Absolutely free. Difficult concepts made easy. Study anywhere, anytime. Hello everyone, in this lecture we will be learning Lagrange method, and that is for first order linear partial differential equations. Welcome to S. Chand Academy. I am Dr. Seema Thakran. If you want to study Lagrange method in detail, please refer to the book by S. Chand Publishing. The ebook link is given in the description box. So let's start with Lagrange method and Lagrange method for linear partial differential equations. So first I will be briefing you what exactly the method is, and then I will take up examples based on the method for the clarity. So let's start with Lagrange method, and that is for linear partial differential equations. So what exactly the method is? First I will brief you the method, then the examples we will be taking. So Lagrange method. First thing is the equation will be of some particular type. So what will be the what will be that particular type? So I will just first write that form. So the equation will have P and Q, and I told you earlier what are P and Q. P and Q are first partial order derivatives. So it means if you are applying Lagrange method in your equation, in your general equation, in your given equation, you should have P and Q, that is del z by del x, del z by del y. It means one dependent variable, two independent variable, and only first order partial derivatives you should have. What are these capital P, Q and R? These are functions of x, y and z. So if you have this type of equation, you can apply Lagrange method. Then what we do basically, this is the equation. After that, then we have Lagrange subsidiary yani the equations which will help to come to the solution of the given partial differential equation. So we have Lagrange subsidiary equations. What are the equations? Just after identifying or having the equation in this form, it means PP plus QQ equal to R. Small p stands for del z by del x, small q stands for del z upon del y, and PQR are functions of x, y and z. So the equation you have to write like this. So it means dy dx dy dz and dx upon capital P, dy upon capital Q. This is how you will be placing the values. P is the coefficient of small p, Q is the coefficient of small q, and R is just whatever you have on the RHS. So these two equations you will be writing. Now what you will do after this? After this you will take up two out of these three equations. It means you have three combinations. Three combinations means you can take up these two or these two. So it means you have three options. Out of these three options, you will be taking any two, and you will what you have to do, solve any two equations, taking two at a time. Two equations means suppose you are taking this and this. This is one, this and this, this and this. But it is not you are taking how you are taking. If you are taking this and this, it means this equation is solvable for x and y. If you are taking y and z, it should be solvable for y and z. It means you are conveniently taking, and if after doing this you will get two constants. So solve any two equations to get the two constants C1 and C2, and the solution will be of the form f of C1, C2 equal to 0. It means first आपकी equation है, then आपने ये subsidiary equations write की हैं, then
उसके बाद आप दो को सॉल्व कर रहे हो, और जब आप सॉल्व करते हो तो इंटीग्रेशन करोगे ऑब्वियसली, बिकॉज डेरिवेटिव है, आपको दिख रहा है dx dy dz। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो वो कांस्टेंट आएगा। दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, पहली से c1 आएगा, दूसरी से c2, एंड आपको उसको f ऑफ फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड कांस्टेंट इक्वल टू 0 की फॉर्म में राइट करना है। दिस इज हाउ यू सॉल्व any equation with using the Lagrange method. So let's take up example. Solve the given partial differential equation using Lagrange method. So the question is, solve the given partial differential equation using Lagrange method. If it is written Lagrange method, it means p and q are there and they have power 1. So you can see this is p, this is q, and it means it is understood this is capital P, this is capital Q as per the notations I have taken, and this is my R. So first step is done. It means we have notify P, Q and R. Now after this we have Lagrange subsidiary equations, and the equations are dx, you will write dy, dz. You can see in your question also x, y, z are there. So p is y square z upon x, this is xz, this is y square. Now little bit just simplify, just take this x in the numerator. So finally we have these two equations. Now you have to see which two equations you are taking out of the three combinations. So I am just taking this and this. So you see z will get cancelled, and so I am taking, I just number this as first, second and third. So taking first and second, because when I am taking first and second, my complete two equations are in x and y form. It means we can solve, and it is the it is perfect to take first and second first. So my first is this and second is this. Remove z. So my equation is giving me x square dx. Take this x to this side, then y square dy. Now because d I have to remove, total derivative, it means I have to integrate. So integrating both sides, this the integration will be x cube by 3, y square integration will be y cube by 3 plus c1. Keep this c1 this side and get this y cube upon 3 to this side. Now I am just solving. Now which two equations I have to take? If I consider this first and the third, if I consider, you just see my y square will get cancelled and I am left with this, and it is perfectly okay. It means this is the case where equations anyhow no need to do any modification. We have cases, we have questions where we need some little modification to come to a solution. So now integrate as we did in the first case. So x square by 2, z square by 2 plus c2. So this is my, I can further solve it, and how I can do that? I can further solve it, and after solving it I can just, this 3c1 I can replace as, I can mark it as dash, So it means this 3c1 dash I am giving notation as c1. Simply this is a constant, so I can write it as simply a c1 constant. Then this is giving me 2c2 dash. So it means my final equation is this. Now as I told you, two equations I took, and I have now my c1 and c2. Therefore, how we write the solution in this situation?
in Lagrange method. So we have solution given by f of or f of C1 comma C2 equal to 0. This is C1 value, this is C2 value. So this is the solution in this case. So two more examples I will be taking, but in those two examples we will have some little modification. It's not that every question is just that taking the equations, getting the solution. So those two examples we will be taking after the break. वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एस चांद एकेडमी। मैं हूं आदित्य और आप लगातार मेरे साथ सीख रहे हैं जूलॉजी को। अब तक के पिछले वीडियोस में हम जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के हाइलाइट्स कवर कर चुके हैं। उन वीडियोस में हमने फर्स्ट सेमेस्टर के पूरे सिलेबस में टेक्सोनॉमी के बारे में डिस्कस किया था। सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में हमने कंपैरेटिव एनाटॉमी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात की थी। जल्दी ही आपको मिलेंगे थर्ड सेमेस्टर के वीडियोस जिसमें आप समझ पाएंगे फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री को। फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं और आपके सिलेबस में कुछ इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स की बायोकेमिस्ट्री एज वेल एज बेसिक मेटाबॉलिज्म की बात की गई है। उन सारे वीडियोस को हम आने वाले सीरीज़ में देखेंगे। कीप वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल। Welcome back to S Chand Academy. So before going to the break, we learned what is Lagrange method. One question based on the Lagrange method we solved. Now two more examples, but little modification. It's not that you will be getting or you will be writing the subsidiary equations, Lagrange method subsidiary equations. You are getting the solution. So if you are supposed to do the modification, how you will be doing? So this is the this is one of the example. So for the solution, first you see this that is this question of Lagrange method. So P you can see, Q you can see, these coefficients are functions of x, y and z, and this is my R function, this is again a function of x, y and z. It means this is perfect form for Lagrange method. So this is this form, where what is P? Capital P, that is x square y minus z. What is Q? That is y square z minus x. What is R? That is z square x minus y. So P, Q, R I got to know. After that I will be writing now Lagrange subsidiary equations are, how we write, कैसे लिख रहे हैं, dx dy dz and then your p value, capital P value, then capital Q value and अब आप देखो, आप तीनों में x y z है, इट मीन्स आप दो लोगे, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, देयर इज नो वे कि आप दो लो एनी मतलब तीन में से दो ले रहे हो, कोई कुछ रिमूव नहीं हो रहा है, लेकिन यू जस्ट नाउ सी द पैटर्न, एवरी क्वेश्चन हैज अ डिफरेंट लाइक अप्रोच. अब आप यहाँ पे इन तीनों इक्वेशन में देयर इज समथिंग, इफ यू ऑब्जर्व, ये तीनों y minus z, z minus x, x minus y. So I just write the pattern which I am talking about. If you see, these have some cyclic factorization concept. You see, x minus y, this is the term, then y minus z, this is this, and then z minus x. So we call these factors as cyclic factors, and you can see the pattern also. Now if there is no way out, then what we do, we use Lagrange multipliers. So what basically that method is, Lagrange multipliers we introduce. and कैसे करेंगे देखो, आप जब आप इस इक्वेशन को x स्क्वायर से रिमूव करते हो, इसमें y स्क्वायर से डिवाइड करते हो, इसको z स्क्वायर से रिमूव करते हो, तो साइक्लिक फैक्टर्स का एक
प्लस पॉइंट क्या है कि उनको जब आप ऐड करोगे ना वो 0 आपको देते हैं, दैट इज द प्लस पॉइंट। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि इसको x स्क्वायर से डिवाइड कर रही हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, डिवाइड 1 बाय एक्स स्क्वायर, 2 बाय वाई स्क्वायर एंड 3 बाय जेड स्क्वायर। अब आपने देखा कि एज आई टोल्ड यू कि डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट क्वेश्चन है तो डिफरेंट अप्रोच है। यहाँ पे ये साइक्लिक का कॉन्सेप्ट है, तो मैं अगर इसको रिमूव कर दूंगी मेरे पास 0 आएगा, और उस 0 का क्या इंपॉर्टेंस होगा वो देखो आप। अब मैं रिमूव कर रही हूँ और प्लस कर रही हूँ, सो इट मीन्स डिवाइड कर रहे हैं और प्लस कर रहे हैं, तो ऊपर आपके पास यू विल गेट दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हो प्लस कर रहे हो। नीचे क्या बनेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर रिमूव हो गया तो यू आर सिंपली लेफ्ट विद वाई माइनस जेड, यहाँ से वाई स्क्वायर रिमूव हुआ जेड माइनस एक्स, वहाँ से जेड स्क्वायर रिमूव हुआ सिंपली एक्स माइनस वाई। तो आपके पास ये देखो जेड जेड कैंसिल्स, एक्स एक्स कैंसिल्स, वाई वाई कैंसिल्स, इट मीन्स 0 आ गया। अब इस 0 का क्या इंपॉर्टेंस है, अगर आप Lagrange मेथड कर रहे हो तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस इस 0 का। अब आप ना ये फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया है, दिस इज फोर्थ प्रोपोर्शन। अब आप इसको किसी के साथ भी बैलेंस कर लो, ओनली वंस ओनली, तो आप इसको जिसके साथ भी बैलेंस करना चाहो, इट्स 0 आते ही आप किसी के साथ भी कंपेयर करो, इट विल बी जस्ट द सेम, नो डिफरेंस एट ऑल। तो मैं फर्स्ट के साथ कंपेयर कर रही हूँ, सो टेकिंग फर्स्ट एंड द न्यू प्रोपोर्शन, टेकिंग फर्स्ट एंड, so I just write the first one first, so dx upon x square y minus, this is my first and this is my new one, so this is done. And how we got this step, so taking first and the I can number it as 4, fourth। अब आप देखो ये जो 0 है ना, जब आप इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कंप्लीटली 0 बन जाएगा, इट मीन्स आपके पास यू आर लेफ्ट विद दिस ओनली, और ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई है कि नाउ यू कैन इंटीग्रेट, और ये बिल्कुल सेपरेट इंटीग्रेट होके यू विल गेट 1 कांस्टेंट, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन इज -1 अपॉन एक्स, वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन इज -1 अपॉन वाई, एंड द सेम वे एंड दिस साइड इट विल बी c1, ठीक है। सो वी हैव, नाउ वी कैन जस्ट रिमूव दिस माइनस साइन और आई जस्ट मेक इट अ डैश, और जो न्यू माइनस के साथ जो है उसको मैं c1 बोल रही हूँ। सो एक सोल्यूशन आ गया। अब सेम वे, सेम जो आपकी इक्वेशंस थी ना उनको दोबारा से ऑब्जर्व करो, ये पर्टिकुलरली साइक्लिक फैक्टर्स जो है ना उसमें ऐसी ऑब्जर्वेशन है। अब आप देखो ये वाली इक्वेशन है, अगर आप यहाँ से सिंपली एक x भी रिमूव करते ना, बिकॉज ऑफ द साइक्लिक फैक्टर कॉन्सेप्ट, yz है यहाँ पे, x साथ में एक x रखोगे, एक y और एक z, और फिर मल्टीप्लाई करोगे तो उस केस में भी 0 आएगा। इट मीन्स साइक्लिक फैक्टर्स में आप ये वाला कॉन्सेप्ट हर बार अप्लाई कर सकते हो। सो व्हाट आई एम डूइंग, अब यहाँ पे फर्स्ट को x से डिवाइड करेंगे, y से डिवाइड करेंगे, z से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक एक आप रिमूव करोगे, ऐड करोगे, यू विल गेट दी सेम टाइप ऑफ 0 आएगा आपके पास, विच इज वेरी वेरी यूजफुल इस टाइप की प्रॉब्लम्स के। अदरवाइज इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, देयर इज नो अदर वे टू सॉल्व दिस। सो नाउ मल्टीप्लाई the first by x, second by y and third by z, and add. I should have written add also here. Divide this and add. We have added. It was understood. I have added only. So it was, we did addition only. Now coming to, so the same way, this time we are dividing it by x, y, z, and we are adding again the equations. What we get? So dx upon x plus dy upon y plus dz, this in the numerator will get, and then in the denominator एक एक रिमूव करोगे आप
एंड रेस्ट इक्वेशंस राइट करोगे। अब आप देखो ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर पार्ट है ये मैं सिर्फ सॉल्व कर रही हूँ। सो एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई एक्स प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई। सो एक्स जेड जेड एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई जेड, इट मीन्स अगेन यू आर गेटिंग 0। अब आप इसको जैसे मैंने पहले किया था किसी से भी कंपेयर करोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड से। सो टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, or sorry, second and fifth one, this is fifth one now, we get, अब आपका फर्स्ट क्या था, it was and this is my new equation, new proportion you can say। अब आप इस फिर से इसको 0, ये इट विल बिकम 0 एंड dx वी आर लेफ्ट विद dx अपॉन x, dy अपॉन y, dz अपॉन z इक्वल टू 0। सिंपली इंटीग्रेट करिए। सो log x log y प्लस log z इक्वल टू c2, c2 डैश करेंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, log प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, log m प्लस log n इज log mn। सो इट मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और बेटर है इसको भी log के टर्म में करते हैं। सो आई एम जस्ट राइटिंग इट एज log c2 डैश। सो log c2 डैश, रिमूव द log पार्ट और जो c2 डैश है इसको c2 ही रखते हैं because this time we are not modifying anything. It just only I am removing the dash only. So C2 C2 C2. So ये मेरा second solution है। Therefore the solution is, you can simply write the solution in this form also, f of C1 C2। C1 आपका जो first वाला था that was f of 1 by x 1 by y 1 by z or this is your C2। So this is the solution and you remember in the first where I was forming the partial differential equation, I took this type of example also. So you can just go reverse way also to find the partial differential equation. So one more example on this problem, or sorry, on this method, and the example is p plus 3q equal to tan y minus 3x. So it looks little difficult, but let's see how to now proceed for this, for the solution of this type of equation. So PQ, it means my capital P is 1 and capital Q is 3. Write the Lagrange equations. Lagrange subsidiary equations are dx, dy, dz. This is 1, this is 3 and this is tan of y minus 3x plus 5z. अब आप देखो फर्स्ट टू इक्वेशंस बहुत सिंपल लग रही हैं लेकिन थर्ड वन इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। पहले फर्स्ट टू को ले लेते हैं एंड वी सी कि इफ एनी हेल्प और एनीथिंग हेल्पफुल विल गेट। सो we can easily take up first and second. So taking first and second. So taking first and second, my first is this, second is this, cross multiply, otherwise this 3 will create problem. So this is giving me, this is dy. So this is my dy, integrate. So this is 3x, this is y. Now if you see 3x y, you should observe your question very carefully. This you can see this. Now if I just, I'm sorry, plus c1 also. So what I am doing, if I just take this y to this side, it where should I add this constant carefully? This is very very important step. I think according to the question I should add my c1 to this side, and why you have a very clear answer. Because my c1 will become, take this 3x to this side, y minus 3x
So so it means I can replace this confusing or complicated term y minus 3x with C1, simply C1. It means anyhow in this question we are not supposed to, or I am not applying any Lagrange multipliers. It just simply I am getting first two equations are helping me to get the another solution, because this is the complicated part. Angle was difficult, but because of this C1 now we have simple a solution. So now I can take up first and third, and my first and third look like tan C1 plus 5z. Take simply integration. So this will be only x, and this will be, because now it is linear one. Sometimes you get confused tan integration and this. So this is simple because it is linear. So this is log of tan C1 plus 5z. Derivative will be in the denominator. So 5 is the derivative. So x equal to and plus C2. So my C2 value, which is important, which we are looking for. So C2 is x minus log of tan. Now I am putting the C1 value also. So, plus 5z upon 5. So this 5 is just this. And this is inside log. So log of tan C1 plus 5z, just writing the terms carefully, because this C2 is x minus log of 10 y minus 3x. This 5z is separate. So C1 I got to know, C1, C2 both we have, therefore the solution is f of C1 comma C2. Write up the values of C1, C2, you will get the solution, or you can just leave this here also, just referring as C1 and C2 are given by, this is another way to write, given by 1 and 2. This is how also you can write the equation or the solution. So in this lecture we have learned Lagrange method, different problems we took to understand how we solve a partial differential equation first order in P and Q with the help of Lagrange method. If you want to study this topic in detail, please refer to the book by S. Chand Publishing. The ebook link is given in the description box below. Don't forget to share, like and subscribe S. Chand Academy. Don't forget to press the bell icon for the future updates. Stay connected, stay tuned. Thank you. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.